Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today it is like a very normal and very small discussion. I will discuss two things. First is about the result, and second thing about the color theory classes. So it is like an notification, like जो मैं आपको बताना चाहता था. There are so many problems. Actually, I got so many messages from the different students. They were sharing about their result कि सर के नंबर आए हैं and I got around the Instagram 300 to 400 something messages. Even I did not count. हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. But it is very much sure that I got around more than 250 or 300 something. Even I could not find a time to check on the YouTube comments. So I have already said you that I am out of the station because of my office work. So I hardly find any time. I just got the messages on the Instagram. So I try कि बच्चों को reply कर दिया जाए. What are they saying कि सर ये नंबर आए हैं. So first of all, thanks for wishing me happy Teachers Day. So it matters a lot for me. And about that second thing, which I would like to discuss about your score. So the maximum score, I think there is a girl. I will not disclose her name, but I think she got around 161 out of 200. और कुछ कम भी रहे हैं, किसके एवरेज भी रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई एम थिंकिंग अराउंड 110 टू 120, जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक बताया है, और 100 टू 120. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आपके जितना भी स्कोर है डिपेंड करता है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी, जो बोर्ड्स के नंबर है वो भी काउंट होंगे. सो ऑल्दो देर इज अ रिलैक्सेशन, बट आई एम व्हाट आई एम फीलिंग कि रिलैक्सेशन आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर है. मतलब आपको बोर्ड के एग्जाम काउंट नहीं होंगे अब फॉर्म भरने के लिए, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर. लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि आपके 50% जो मार्क्स हैं नाटा के काउंट होंगे, और 50% जो आपके 12th में जो नंबर हैं उसके काउंट होंगे. ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज़ चेक करके बताइए इफ़ देर इज समथिंग लाइक कुछ. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, मैं ऑलरेडी आउट ऑफ द स्टेशन हूँ. एक्चुअली आई एम इन द कनातल, सो आई डोंट हैव एनी टाइम पीरियड. For this I just make a short video for you. So for those which are very satisfied about their marks, so thanks for working with me, and काफ़ी आपने मेहनत किया. It is just my guidance only, but it was mainly your hard work. आपने मेहनत किया है इसीलिए आपके नंबर अच्छे हैं. The only reason is this. There is nothing like कि किसी की वजह से हो जाता है, नहीं होता है. आपको गाइडेंस मिल सकती है. आई कैन ओनली गाइड यू कि अच्छा ये पढ़ना है, बट अल्टीमेटली जो आपको परफॉर्म करना है इट इज़ यू. तो आप जैसा एग्जाम में जाकर करते हैं. लेकिन कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली बच्चों के लिए. फॉर एग्जांपल किसी का पेपर री एग्जाम के लिए बोल रहा है कि द डिटेल्स आर नॉट येट आउट. सो वेट फॉर 1 day 2 day. ऐसा नहीं होता है कि एकदम से कुछ चली जाएगी. सो हैव पेशेंस. 1-2 दिन का वेट कीजिए. कल संडे है तो हो सकता है मंडे दे विल कम अप विद न्यू गाइडलाइंस. सो जिनके पास भी आ रहे हैं जो प्री एग्जाम का जो ऑप्शन है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. इट इज़ ओनली फॉर दोज हु फेस्ड a technical glitch or the problem in their exam related information. Clear? So one issue is there कि उनका जो like the exam they approval is pending or something. So don't get upset. It is from their side, not from you. So they will release after 1 day 2 day. Maybe हो सकता है आज ही कर दें या कल या परसों. So इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है. So don't take tension. And I will rather recommend to focus on the 12th of exam, 12th of September. The exam is on 12th of September, right? वन मोर थिंग कि किसी के नंबर कम आए हैं तो इट देर हार्डली यू हैव, आई थिंक यू वी स्टिल हैव द 7 days, राइट? सो ये काम तो बाद में सोचा जा सकता है कि ये नंबर कम आए हैं, नंबर कम दिए हैं, इसमें सिमेट्री है या नहीं है. अभी वो टाइम नहीं है. व्हाट आई एम थिंकिंग, आप उसको एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए, जो भी सही है, लेकिन उसमें क्रिटिसाइज करने का, अपना टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल फायदा नहीं है. इट इज़ रादर आई विल रिकमेंड यू कि जो भी आपकी गलती रही है, जो भी आपके पास, जो अभी आपके नंबर कम आए हैं या फिर आप चाहते हैं कि इंप्रूव करना, डू वन थिंग. आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, आपकी रेस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है. आप उसमें नंबर चेक कीजिए कि आपके सबसे नंबर कम कहाँ पर आए हैं. वेयर आर यू लैकिंग? सो चेक वेयर आर यू लैकिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लैकिंग PTQs, सो जस्ट फोकस इट कि PTQ में नंबर कम क्यों आ रहे, वाई आई एम जस्ट गेटिंग लेस नंबर इन द PTQs. सो वर्क ऑन दिस पार्ट. Clear? And still we have another attempt. So wait for 7 days. Restart your preparation again, and it is just a 7 days we have. Work out on this thing. And I will only recommend for this thing. And the one more thing that I will suggest you to work on your basics. Basics मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन है, उस पर वर्कआउट करो. डोंट थिंक अबाउट कि ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर लोगे या फिर ज़्यादा PTQ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको काम अच्छा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू वर्कआउट की सिमेट्री. व्हाट इज योर एक्चुअली मीनिंग ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज दैट.
So I have already uploaded 2 or 3 videos. Although कुछ चीजें रहती हैं, I will try कि I will upload this thing, but there's a problem from my side as well. Even I work for around 1 month. We work for 1 month together. लेकिन there is a problem from my office side, so I have to manage it. But although I will try it for it, but what I am recommending this time, just go back to your studies, go back your basic videos and check it. What is the depth? What is the meaning of depth? What is the rhythm? What is the hierarchy? What is the symmetry? What is other things? So this is going to be very helpful for you, because it is like PTQs. They are having 125 marks. So ultimately, you cannot have a good marks without working on the PTQs ultimately. And for the PCM, you will save 22.5 marks. So you have much idea what type of questions you are getting. So please, I will recommend you work out where are you lacking. Maybe it is PTQ or the elevation plan section. It has to be like this. And there is a probability that you are sending so many messages and comments. Although I am trying कि हर बच्चे के पास मैं आपको reply कर दूं, but if something is there, if I am not able to reply you or not able to solve your queries, so please forgive me for this thing. I am trying, but again there is a chance is that I will forgot something, comment पर reply नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी वो हम बाद में बात कर सकते हैं. The next information about today is color theory. So tomorrow, what about the color theory? There will be a lecture on the live classes. It is going to be live classes first of all, and you have to download Google Meet app. I will discuss with it to you. So tomorrow you have on the Sunday, that is 6th of September, on 4 to 5. So 4 in the evening, 4 to 5:30. 1 hour will be for the class time period and 30 minutes for the discussion period. So in 1 hour, he will give you a lecture. He is Amit Verma. Amit Verma is in my from my college and he is my senior as well. So I request him that please take a video, take a class for the color theory, and there is already a video available on our YouTube channel. So you can watch this thing. So please, and there will be a live class. So one more thing, he's from CCA. So after the discussion, if he have a time and you also have the time, you can also discuss about some other thing. Please, but please don't start asking, sir, my marks is 120 number. If it is, I am able to get a good college. He does not know about this thing. He is very new about in this profession. He's an architect and he is practicing in Delhi itself for the last 10 years. So he is good in AutoCAD, 3D visualization. You can ask about these topics from that person. But about the cutoff and the score marks and all over thing, it is like very normal things. It is, he does not know about these issues. So, and the next thing is how to get the link. There was another queries about the how will you get the link. I will share you the link at 3:45. I will share you a link or the code, Google Meet code on the Facebook, Telegram, Instagram, and the comment as even the YouTube as well. So it is very easy for you. Just download the Google Meet app, and after downloading the Google Meet app, just sign in from your Google ID, and there will be an option: start a meeting and join a meeting. So in join a meeting, you have to put the code, and when you enter the code, the message will be given to that person, and he will accept your code, and you will be able to join this clip. So please don't get late. 4 to 5, you are going to have a class, and please see you again, and thank you for joining me.